Assalamu alaikum everyone. Today's lesson is about to past continuous tense. The past continuous tense is an important tense in English. We use it to say what we were in the middle of doing at a particular moment in the past. Past continuous tense वो बहुत ही important tense है इंग्लिश में. हम यूज़ करते हैं इसको पास्ट में जब हम पास्ट के मिडल में जब हम कर रहे होते हैं कुछ काम पर्टिकुलर मोमेंट में. How do we make the past continuous tense? The structure of the past continuous tense is subject plus auxiliary verbs plus main verbs. For negative sentences in the past continuous tense, we insert not between the auxiliary verb and the main verb. For question sentences, we exchange the subject and auxiliary verbs. There are some use of past continuous tense. Here, use number one is interrupted action in the past. Use the past continuous to indicate that a longer action in the past was interrupted. Past continuous जो है वो indicate करता है a longer action को in the past जब interrupted किया जाता है. The interruption is usually a shorter action in the simple past. और ये इंटरप्शन जो है वो शॉर्टर एक्शन होता है सिंपल पास्ट में. रिमेंबर दिस कैन बी अ रियल इंटरप्शन और जस्ट एन इंटरप्शन इन टाइम. याद रहे कि ये इंटरप्शन जो है वो रियल होती हैं और जस्ट टाइम के में होती हैं. फॉर एग्जांपल आई वाज वाचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड. When the phone rang, she was writing a letter. While we were having the picnic, it started to rain, and so on others. Use number two has specific time as an interruption. In use one described above, the past continuous is interrupted by a shorter action in the simple past. However, you can also use a specific time as an interruption. जैसे कि यूज़ नंबर वन में बताया गया है कि पास्ट कंटिन्यूस जो है वो इंटरप्टेड करता है एक शॉर्टर एक्शन के लिए सिंपल पास्ट में. और आप इसको एक स्पेसिफिक टाइम इसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है इसको यूज़ करने का. फॉर एग्जांपल लास्ट नाइट एट 6 p.m. I was eating dinner. At midnight we were still driving through the desert. Yesterday at this time I was sitting at my desk at work. यूज़ नंबर थ्री है parallel actions. When you use the past continuous with two actions in the same sentence, it expresses the idea that both actions were happening at the same time. The actions are parallel. जब हम यूज़ करते हैं past continuous को में दो actions एक ही सेंटेंस में इट एक्सप्रेसेस, तो ये शो करता है ऐसा आइडिया जिसमें दोनों एक्शन जो है वो हैपनिंग होते हैं एट द सेम टाइम और ये एक्शन पैरेलल कहलाता है. फॉर एग्जांपल आई वाज स्टडिंग वाइल ही वाज मेकिंग डिनर, वाइल एलन वाज रीडिंग, टिम वाज वाचिंग टेलीविजन. यूज नंबर फोर है एटमॉस्फेयर. इन इंग्लिश we often use a series of parallel actions to describe the atmosphere at the particular time in the past. यहाँ पे हम जो है वो पैरेलल एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं और जो एटमॉस्फेयर है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पास्ट में होता है. फॉर एग्जांपल व्हेन आई वॉकड इनटू द office, several people were busily typing. Some were talking on the phones. The boss was yelling directions, and customers were waiting to be helped. One customer was yelling at the secretary and waving his hands. Others were complaining to each other about the bad service. Use number four have repetition and irritation with always. The past continues with words such as always or constantly expresses the idea that something irritating or shocking after happened in the past. The concept is very similar to the expression used to but with negative emotions. Remember to put the words always or constantly between be and verb plus ing.
ये पास्ट कंटिन्यूस में जो वर्ड होता है ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली, ये एक्सप्रेस करता है ऐसे आइडिया को जहाँ पे कुछ इरिटेटिंग और शॉकिंग हैपनिंग होता है पास्ट में। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो वेरी सिमिलर टू द एक्सप्रेशन यूज टू, और ये बहुत ही यूज टू एक्सप्रेशन है विद नेगेटिव इमोशंस के साथ। रिमेम्बर, याद रहे कि ये ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली वर्ड जो है इनको पुट करना इनके साथ बिटवीन बी एंड वर्ब की जो आई एन जी है वो इनके साथ यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट, ही वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, ही अननोइड एवरी वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।